category of drug is a sulfonylurease. First category of drug is a sulfonylurease. Okay, so in that you have different drugs like tolbutamide, chlorpropamide, glibenclamide, glimepiride, glyclazide, and glimepiride, glibenclamide, glyclazide, and glyburide. So they are known as the second generation, and these two, tolbutamide and chlorpropamide, they are known as the first generation. What is the mechanism of action? इनका mechanism क्या है? They are the KTP channel blockers. They are the KTP channel blockers. You can see the mechanism here. In the pancreas, what happens? Insulin released from beta cells. Okay, pancreas. Okay, so in the pancreas, stimulation of insulin release from the beta cell. They will stimulate the insulin release from the beta cell, and they will also increase the beta cell sensitivity towards the glucose. Sulfonylurea receptor उनको बोलते हैं KTP channel, ATP dependent KTP channel. There is a KTP channel blocker. Okay, so in the cell membrane of beta cells of Langerhans, so they in the cell membrane of beta cells of Langerhans, activation of potassium channel result in the influx of the activation and inactivation of potassium channel result in the influx of calcium in the cell, and that causes the depolarization of cell membrane of the beta cell, which leads to exocytosis of insulin release. Okay? Now in the liver, they inhibit the synthesis of gluconeogenesis and glycogenolysis. That is the mechanism. Mechanism याद रखो. So KTP channel blockers, potassium channel blockers, ATP sensitive potassium channel blockers. So they will bind to ATP sensitive potassium channel and will block. Because of the blockage, potassium will accumulate inside the cell. Potassium क्या है? Positive charge. Cell में क्या होता है? Inside negative charge. Potassium will get accumulated, which will stimulate the up to a certain threshold potential. Then after that, it will stimulate the calcium pump. So calcium will come inside the cell and will cause that exocytosis of insulin. Okay? Now in the liver, they inhibit the gluconeogenesis and glycogenesis. तो एक एंड पे क्या कर रहा है? पैंक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ रहा है, दूसरे एंड पे क्या कर रहा है? लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस कम कर रहा है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कम कर रहा है. मतलब एक एंड पे ग्लूकोज नहीं बनने दे रहा है और एक एंड पे क्या कर रहा है? इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है. इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा रहा तो यूटिलाइजेशन होगा. दैट्स हाउ इट विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है? सो आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, पीओ मतलब पर ओरल, पीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है पर ओरल. सो आफ्टर पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, drugs lower the blood sugar level in the non-diabetic and selected diabetic patient. So they also lower the increased free fatty acids in the diabetic patient. Sulfonylureas are only effective when pancreas are functioning. कितना functioning होना चाहिए? At least 30%. मैंने बोला है 30%. So if they are effective only in patient who have at least 30% of pancreatic beta cells. So sulfonylureas are effective only when pancreas are functioning. Patient on the sulfonylureas tends to gain the weight. मतलब इनका एडवर्स इफेक्ट था वेट गेन. सल्फोनिलयूरेज का ट्रीटमेंट होगा तो वो पेशेंट का वेट बढ़ेगा. वेट गेन इज द एडवर्स इफेक्ट. Absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME). So they are rapidly absorbed from the empty stomach, from the GI tract. Food reduces the absorption. They are extensively bind to plasma proteins and metabolized in the liver. They are extensively bind to plasma proteins. They are extensively bind to the plasma protein. Remember, so absorption, they are rapidly absorbed from the GIT. Presence of food decreases the absorption and they are extensively bind to plasma proteins. Plasma protein binding क्या होता है? ये एक बैच को नहीं हुआ है, एक बैच को ऑलरेडी हो चुका है. They are metabolized in the liver. Now adverse reaction क्या है? इनके adverse reaction. So in every pharmacological chapter, what is in pharmacology के कौन सा भी चैप्टर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका? सबसे पहले क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, then ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination, then adverse effect, then uses, indications, measures, uses. Indication means use and contraindications. Okay, so these part, then toxicity, antidote, that part is important. Okay, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन इसमें ही आता है. Now adverse effect क्या है? Weight gain. Weight gain मतलब weight put up होगा, put up of weight. Weight gain is moderate. Then most common adverse effect of this drug is the hypoglycemia, as like your insulin. Hypoglycemia, because they क्या करते हैं? Because they secrete the insulin. Insulin will cause decrease in blood glucose. So hypoglycemia is the most common adverse effect of sulfonylureas. Okay, remember.
that can result into increase the overdose or decrease the food intake. तो hypoglycemia क्यों होगा? Increased dose of sulfonylureas or decreased intake of food or vomiting or liver kidney disease and protein displacement interaction. इनको protein displacement interaction भी होती है, मतलब they will have protein, they will have displacement type of protein interaction with the other drugs. Sulfonylureas will also have allergic reaction. Okay, can cause allergic reaction like sulfonamides, okay? Bone marrow suppression, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एग्रानुलोसाइटोसिस. ये क्या होता है? ये अपन एक बैच को तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बैच को जब ब्लड लूंगा तब मालूम. These drug can cause jaundice. These drug can cause cholestatic jaundice. These drug can cause cholestatic jaundice. Cholestatic jaundice क्या होता है? Okay, because they will have cholestatic jaundice means because of the obstruction of gallbladder. So there is an increased blood level of bilirubin. That is known as cholestatic jaundice. Occasionally they can cause eosinophilia that is caused by chloropropamide. These are the adverse effects. इसमें ड्रग क्या आता है? टोल्बिटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, क्लेबिंग्रामाइड, ग्लिमिट्राइड. What are the therapeutic uses? इसका यूज क्या होगा? It is used for the treatment of fresh and maturity onset of diabetes. It is a non-insulin dependent diabetes mellitus. Okay, and diabetes insipidus. Limitations of sulfonylureas. क्या है limitations? They are ineffective in the insulin dependent diabetes mellitus. Diabetic coma. Diabetic coma मतलब increased ketone bodies, ketoacidosis, increase the ketoacidosis due to lack of insulin. That is diabetic coma. Presence of infection and or heavy ketonuria. Diabetes due to pancreectomy. Pancreectomy मतलब क्या है? अगर आपका पैंक्रियास रिमूव किया है, इट इज नॉट पैंक्रिएक्टोमी. अगर आपका पैंक्रियास रिमूव किया है, पैंक्रिया रिमूव किया मतलब आइलेट्स भी उसके साथ चले जाएंगे, है ना? आइलेट्स गए मतलब बीटा सेल भी चले जाएंगे. बीटा सेल नहीं मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा. इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? ये सिर्फ स्टिमुलेट ही करते हैं. So it is ineffective in case of diabetes due to pancreatomy, surgical diabetes and very long standing diabetes. It is a non-insulin dependent diabetes. So type 2 में basically use करते हैं ये. Okay, याद रखो sulfonylureas. Okay, so mechanism of action एक बार फिर से मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे. So this is known as a pancreatic beta cell. ठीक है, pancreatic beta cells of Langerhans. उसमें क्या होता है? इंसुलिन is synthesized and stored in the granules known as insulin granules. Okay? इंसुलिन यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है. कहाँ से आता है? प्री प्रो इंसुलिन से. प्री प्रो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 110. 110 अमीनो एसिड होते हैं प्री प्रो इंसुलिन में. याद रखो, कभी कभी मैं चीजें वहाँ पे बोलता नहीं हूँ, अचानक मेरे ध्यान में आता है. प्री प्रो इंसुलिन जो होता है उसमें 110 अमीनो एसिड. प्री प्रो इंसुलिन 110 अमीनो एसिड and insulin 51 amino acid. Remember, okay? Now these beta cells of Langerhans will have one receptor known as a potassium sensitive, ATP sensitive potassium channel. This will have some channels known as a ATP sensitive potassium channel. Okay. Now sulfonamides, now sulfonylureas and meglitinides. Sulfonylureas and meglitinides, they act or they binds with this receptor. Sulfonylureas and meglitinides, these two drugs binds with the sulfonylureas receptor 1, that is nothing but the ATP sensitive potassium channel. क्या होता है ATP sensitive potassium channel? So they binds this and inhibit this ATP sensitive potassium channel. ये potassium channel का काम क्या होता है? ये inside potassium जो है उसको outside भेजना. Due to inhibition of this ATP sensitive potassium channel, so what will happen? The potassium will get accumulated inside the cell. The level of potassium will be increased in the cell. So it has a positive charge. So there is a inside the cell normally negativity होता है. So in accumulation of this potassium, more potassium in the cell, that result in the positive potential. Okay, that is in the depolarization. That is ये positive है, inside cell negative होता है. Increased level of potassium और पॉजिटिव आयन दैट कॉजेज द डीपोलराइजेशन. देखो एक में क्या है? नेगेटिव, इनसाइड सेल नेगेटिव होता है, आउटसाइड सेल पॉजिटिव होता है. जब कोई कैटायन बहुत ज्यादा अंदर गया, सो दैट कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द इनसाइड पोटेंशियल. इनसाइड पोटेंशियल क्या है? इनसाइड पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव आयन जाए तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा ना.
disturbance in the potential is known as a depolarization. The disturbance in the potential is known as a disturbance in the potential of inside cell is known as a depolarization. And suppose एक anion गया, क्लोराइड गया तो अंदर पहले नेगेटिव है तो और नेगेटिव हो जाएगा, उसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन. Depolarization means disturbance of potassium, disturbance of inside cell potential. Okay, known as a depolarization. So अगर potassium, if potassium is concentrated, it is accumulated inside cell due to blockage of this ATP sensitive potassium channel. So potassium, the positive nature of cell will increase, that causes the depolarization. This depolarization causes the opening of calcium ion channel. So outside calcium that is present in the extracellular fluid, यहाँ पे extracellular, inside the cell. So calcium from extracellular fluid will come inside and it causes the degranulation of this insulin granules. It's exocytosis of insulin granules. So insulin will be released. This is the mechanism of sulfonyl urease and meglitinides. समझ में आया? यहाँ पे और एक दिया है. Okay. So you know that there is a GLP-1. What is GLP-1? Glucagon-like peptide. And GIP is also like similar with the glucagon-like peptide. It is known as the glucose insulinogen peptide. Okay, GLP means glucagon-like peptide, and this is a glucose insulinogen peptide. So GIP. So they are known as a. So these GLP-1 and GIP, they are secreted in response to the oral glucose. Or GLP, GIP, they have their own receptor known as the incretin receptor. Incretin receptor. They are the GPCR, G protein coupled receptor. So okay, they will combine with this drug, this receptor, and will activate this. That leads to activation of secondary receptor. This is adenyl cyclase. Adenyl cyclase नाम का enzyme activate होगा. It will produce cyclic AMP from ATP. Increase the cyclic AMP level will also stimulate the insulin release. That's how these GLP-1 agonist कौन है? Exenatide, okay, exenatide and liraglutide. They are the GLP-1 agonist. Okay, now ये GLP का लाइफ स्पैन जो होता है, so it is a very, their short T-half is very short, 1 to 3 minutes. So they are metabolized by the enzyme known as a DPP4, dipeptidylpeptidase 4. Dipeptidylpeptidase 4 enzyme is inhibited by sitagliptin, vildagliptin, sexagliptin, alogliptin. This is I have explained the mechanism of three classes of drug. Okay? First classes क्या है? Meglitinides and sulfonylureas. दूसरा क्या है? DPP4 inhibitors. तीसरा क्या है? GLP agonist. Next class is nothing but the bigonides. Gonadin group. Okay, NH2, C double bond, NH2, NH, again NH, C double bond, NH. That is known as the bigonides. So pre-gonadin radical is important for hypoglycemic activity. Pre-gonadin radical is important for hypoglycemic activity in case of bigonides. Bigonides में example क्या है? Fenformin, metformin, then इसके बाद में आता है टोरजोलामाइड, एंड उसके बाद में आता है एसिटोक्सामाइड. टोरजोलामाइड, एसिटोक्सामाइड ये यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, दे डू नॉट स्टिमुलेट द पैंक्रेटिक सेल टू रिलीज द इंसुलिन. ये स्टिमुलेट नहीं करेंगे. ये क्या करेंगे? ये इनका मैकेनिज्म अलग है. सेवरल मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व इन द decrease in the blood glucose level by these bigonides. So what is the mechanism? So they increases the peripheral utilization of glucose. They will increase the peripheral utilization of glucose. They will delay in the glucose absorption. Glucose का absorption कम करेंगे. Increase in the sensitivity to the peripheral tissue. Increase in the sensitivity of insulin to the peripheral tissue. And they also reduces the appetite. भूख भी कम करते हैं. They acts by activating the AMPK dependent, okay, AMP dependent protein kinase enzyme. So AMPK activator, अपने देखा है AMPK activator. They activate the adenosine monophosphate protein kinase, AMPK protein kinase. So AMP, adenine monophosphate dependent protein kinase. So it increases the utilization of glucose and decreases the production of glucose. मैंने बोला था. So that is the mechanism. So production of glucose means it will decrease the gluconeogenesis, it will decrease the glycogenolysis, but it will increase the glycolysis. It will increase the
utilization of glucose, it will increase the sensitivity of resistant cell to the insulin. Okay. Now pharmacological actions क्या है इनके? So these drugs they don't lower the blood sugar level in the normal patient, but जो अपना देखा है sulfonylureas, they can decrease the blood sugar level in the normal person also. But metformin will not decrease the blood sugar level of normal person जिसको diabetes नहीं है उनमें sugar level कम नहीं करेंगे, but it will decrease the blood sugar level in the diabetic patient. Okay. This drug also potentiate or increases the action of insulin and sulfonylureas. This drug may develop ketoacidosis with the minimum hyperglycemia and glycosuria because they do not elevate the ketogenesis. Total plasma LDL, cholesterol, and triglyceride levels increased. Then absorption, distribution, metabolism, elimination. Okay, they adequately absorb upon the oral administration, particularly metformin, and largely excreted in the unchanged in the urine. But metformin, okay, metformin is the first line drug. Remember, metformin is the first line drug for type 2 diabetes. Metformin is the first line drug for type 2 diabetes. Then adverse reaction क्या है इनका? Unpleasant or metallic taste in the mouth. क्वेश्चन आ चुका है. Adverse effect of metformin. Biconides. यूरिया केसेस है ना इसलिए अनप्लीजेंट बिटर और मेटेलिक टेस्ट इन द एंड एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया मतलब क्या है? एनोरेक्सिया में सप्रेशन ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगने देगा आपको, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनोरेक्सिया एंड मेटेलिक टेस्ट सो दे डिक्रीजेस द वेट ऑफ पेशेंट, वेट लॉस होगा. वेट गेन कौन करता है? सल्फोनिलयूरियस. पहले जो देखा है वो वेट गेन करता है, ये क्या करता है? वेट लॉस करता है. नाउसिया, देन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, देन आल्सो प्रोड्यूसेस लिथार्जी, आलसीपना, lethargy, weakness, excessive weight loss in few patient, excessive weight loss in few patient. Okay. Now इसमें कौन से ड्रग आते हैं? metformin and penformin. Okay. But okay, but penformin is no more used. Why? Penformin is no more used because it causes the lactic acidosis with the penformin therapy, and that's why penformin is withdrawn from market. क्वेश्चन आता है आपको, why what is the drawback of penformin, or why penformin is no more used? Lactic acidosis. Okay. Now therapeutic uses of these biconides. So in the obese patient with the NIDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, it is a first line drug for type 2 diabetes. Then secondary sulfonylurea failure, sulfonylurea drug अगर फेल हो गए डायबिटीज में तो ये उनको इसको. Then they are also used in, यहाँ पे देखो, यहाँ पे important है, they are also used in a polycystic ovary syndrome, polycystic ovarian syndrome जो गर्ल्स में होता है, polycystic ovarian syndrome, oligovulation. So metformin का other than diabetes क्या यूज है? So it is used in the polycystic ovarian syndrome. तो लेडीज में जो गर्ल्स में जो ओवरी होता है उसमें सिस्ट डेवलप होता है, मतलब उसमें सेल्स डेवलप होते हैं अलग अलग, मतलब एक की जगह दो चार ओम हो गए, लेकिन दैट ओम इज इमेच्योर एंड यूजलेस, वो कंसेप्ट नहीं कर पाते, कंसेप्शन होता नहीं उनमें. तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. सो मेटफॉर्मिन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. ओलिगो ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन कम होता है, ब्रिंग अबाउट द रेगुलर ओवुलेशन इन द पेशेंट. समझ में आया क्या? समझ रहा है क्या आपको? और नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द अदर ड्रग कौन से? पहले देखो, अदर ड्रग है आपका एक्यारबोज, मिग्लिटॉल, वोल्गिबोज, ओग्लिबोज, एक्यारबोज, मिग्लिटॉल, ओग्लिबोज. दे आर नोन एज अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर. ओलिगोसैकेराइड फ्रॉम माइक्रोबियल ओरिजिन. क्या है एक्यारबोज? ओलिगोसैकेराइड है. क्या है एक्यारबोज? इट इज ओलिगोसैकेराइड obtained from microbial source. Mechanism क्या है? They binds competitively with the carbohydrate binding site of alpha glucosidase enzyme in the porous borders of enterocytes of jejunum and inhibits the alpha glucosidase enzyme. It prevents the absorption of carbohydrate but not glucose. Okay? Because it does not interact with the sodium dependent glucose transport. तो जो बाकी जो ओलिगोसैकेराइड से ग्लूकोज बनेगा वो उसका उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होने देंगे, लेकिन जो नॉर्मल ग्लूकोज है उसका तो एब्सॉर्प्शन होने देंगे. एडवर्स रिएक्शन क्या है इनका? फ्लैटुलेंस, स्टमक में गैस बनेगा, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लूज स्टूल्स, ये डायरिया करेगा, लूज स्टूल्स. क्यों? बिकॉज ऑफ द दिस इज
also fermented in the intestine. ये इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होता है अकेराबोस का, एंड उसमें एक ये बनता है, क्या बनता है उसका reductive derivative बनता है, that causes the loose stool. So occasionally it will increase the liver enzyme. Then maglitol कैसा है? Maglitol is a similar to acarabose but it is a less hepatotoxic. तो acarabose का hepatotoxicity हो सकता है. Maglitol is similar to acarabose but less hepatotoxic. Both drugs are contraindicated in case of patient with a chronic intestinal disease including IBD. IBD मतलब क्या? Irritable bowel disease, okay, और intestinal obstruction. Intestinal intestinal obstruction हो गया, intestine में अगर कुछ close हो गया, obstruction of intestine. So in that condition, and also irritable bowel disease. So in those conditions, these drugs are contraindicated. Miglitol, acarabose, and volgibose. Now next one is the thiazolidine diones. Thiazolidine diones. They are known as the glitazones. Okay? They are known as the glitazones. तो इसमें आता है पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन और एक दोनों ग्लिटाजोन आती है. Mechanism of action क्या है? So they binds with the they binds okay they binds and यहाँ पे add नहीं and है and activate the peroxisome proliferated activated receptor gamma PPR gamma. It is a nuclear receptor. क्या होता है ये? nuclear receptor है and that regulates the insulin excretion responsive gene and involving the peripheral nutrition. ये जीन क्या करेगा? इंसुलिन का एक्सप्रेशन करेगा, मतलब इंसुलिन बनाने वाले जीन जो होते हैं उसको और ज्यादा बनाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ज्यादा बनाएगा. It is utilized in the peripheral. It increases the utilization of peripheral. The increase in the glucose transport into muscle. They increases the glucose transport in the muscle and adipose tissue by increasing the synthesis of particular transport protein, glucose transport, and also regulate the adipose tissue differentiation. इनकी pharmacological action देखो क्या है? They decrease the insulin resistance and hyperinsulinemia. इंसुलिन सिक्रेट करते हैं ज़्यादा. ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज करेगा. डिक्रीज इन द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरइंसुलिनेमिया. इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करेंगे, ब्लड ग्लूकोज एंड ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा करेंगे. देन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड एसडीएल को बढ़ाएंगे एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी एसडीएल एंड आईडीएल इनका लेवल बढ़ाएंगे. Adverse reaction क्या है? So they decrease in the hemoglobin, hematocrit, neutrophils count, okay, and increases the enzymes. Use क्या है? Non-insulin dependent diabetes mellitus, other insulin resistant state such as polycystic ovary. Polycystic ovary में कौन यूज करते हैं? Metformin as well as thiazolidine diones. याद रखो, Metformin as well as thiazolidine diones. समझ में आ रहा है क्या? Yes or no? क्योंकि important है पार्ट. टाइम अपने पास कम है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको रेगुलरली लेक्चर में रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू अटेंड द लेक्चर. यू कैन सी मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स. डिफरेंट ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स है ना जो डायबिटीज के, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शॉर्ट में फिर से एक बार बोलता हूँ. सो मेटफॉर्मिन एंड थायाजोलिडीन डायोन्स. दे थायाजोलिडीन डायोन्स, मेटफॉर्मिन मतलब ग्लिटाजोन्स एंड मेटफॉर्मिन्स, दे विल inhibit the glucose production in the liver, means they will inhibit the gluconeogenesis and glycogenolysis. Glitazones and metformin again, they will increase the utilization of glucose in the peripheral muscle. तो blood glucose level क्या है? कम हो जाएंगे ना. Sulfonyl urease, oral sulfonyl urease and meglitinides, repaglinide, netaglinide, वो क्या करेंगे? Increases the release of insulin, ठीक है शॉर्ट में. अल्फा ग्लूकोस्पेज इनहिबिटर क्या करेंगे? जो अपन स्टार्च खाते हैं, मतलब जो खाना खाते हैं, वो क्या मेटाबोलाइज होके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. दैट इज डन बाय अल्फा ग्लूकोस्पेज एंजाइम. दैट इज इनहिबिटेड बाय acarabose, मिग्लिटॉल, वोल्गिबोज. दे विल इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोस्पेज एंजाइम. ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. नॉर्मली ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा. ठीक है, दैट इज इनहिबिटेड बाय मेटफॉर्मिन एंड ग्लिटाजोन्स, पायोग्लिटाजोन एंड रोसाग्लिटाजोन. ओके, तो ये यहाँ पे और एक बार बताता हूँ.
अगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ गया लिवर में, कैसे बढ़ेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से। वो क्या, ये फैक्टर क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, बट इसको इनहिबिट कौन करता है? मेटफॉर्मिन एंड ग्लूटाजोन। ओके, देन मसल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन, ये ग्लूकोज कहाँ पे यूटिलाइज होता है? मसल्स में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इसको कौन बढ़ाता है? ग्लूटाजोन एंड मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन मतलब मतलब ये क्या मतलब, बाइगोनाइट्स एंड thiazolidinediones, they increases the utilization of glucose and decreases the production of glucose. And oral sulfonylureas and meglitinides, rapaglinide, they increases the secretion of insulin in the pancreas. And this drug, acarbose, meglitol, oglibose, they inhibit the alpha glucosidase enzyme. और एक दो कैटेगरी बचा है आपका, ड्रग कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया। कौन से ड्रग ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं? ड्रग कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया कौन से ड्रग करते हैं? सो हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये ऑलरेडी देखा है, थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, adrenaline, noradrenaline. Okay, these will increase the blood sugar level. Then again, certain drugs like beta blockers, beta blockers, beta blockers, then diazoxide, then phenytoin, thiazides, nicotinic acid. So they causes the increase in the blood sugar level. Okay. Now drug which causes the hypoglycemia, decrease in the blood sugar level. कौन करता है decrease? MAO inhibitors, beta blockers. ये beta blockers नहीं है, beta agonist है. And these drug hormones like glucagon, glucocorticoid, thyroxine hormone, then estrogen, progesterone, then adrenaline, noradrenaline, beta 2 agonist, beta 2 stimulant, diazoxide, phenytoin, they will increase the blood sugar level, cause the hyperglycemia. Drugs like MAO inhibitor, beta blockers, dipyridamole, alcohol, ACE inhibitors, they will decrease the blood sugar level, cause the hypoglycemia. Okay. ड्रग कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, मतलब आपको समझ में आएगा ब्लड शुगर लेवल कब कम हुआ है, और आपको मतलब ये दे विल सप्रेस द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोप्रानोल, दैट्स व्हाई प्रोप्रानोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ डायबिटीज. स्वीटनिंग एजेंट कौन से होते हैं? स्वीटनिंग एजेंट आपने ऑलरेडी देखा है आपने, सैकरिन, सोडियम सैकरिन इज 500 times more sweeter than sucrose, but it is a carcinogenic, ये कैंसर पैदा करता है. It is a carcinogenic, 500 times more sweet than sucrose. Then दूसरा होता है aspartame, is a dipeptide of aspartic acid and methyl ester of phenylalanine. Aspartame क्या है? Phenylalanine plus aspartic acid. It is a 200 times more sweeter than sucrose. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Saccharin is 500 times more sweeter than sucrose, GPAT 21 में. Then neotame is analog of aspartame, water soluble होता है, 30 to 60 times more sweeter than aspartame. ये ऑलरेडी हो चुका है आपका. नेक्स्ट विल सी important points again from this chapter overall. So alpha 2 receptor, adrenergic alpha 2 receptor stimulation inhibit the insulin release, whereas beta 2 stimulation and vagal stimulation increases the insulin release. तो ये adrenergic beta 2 receptor को stimulate होगा, because beta 2 receptor is present in the bronchi as well as some skeletal muscle as well as in the pancreas. So stimulation of beta 2 increases the glucose level. Stimulation of alpha 2 inhibit the glucose level. As it is question आ चुका है सर, तो as it is question इसके ऊपर आ चुका है. ये आपको फिर से एक बार आएगा when we will see drugs used in the sympathetic and parasympathetic drug. So remember, adrenergic or sympathetic alpha 2 stimulation inhibit the insulin release, whereas beta 2 stimulation and vagal stimulation will increase the insulin release. ठीक है. Next है beta blocker will mask all the signs of hypoglycemia. Beta blockers will mask all the signs of hypoglycemia except sweating, which is mediated by adrenergic fiber, not beta receptor. So that's why propranolol is contraindicated in case of diabetes. Now insulin preparations जो है, they are supplemented and stored at a natural pH, that is 7.2 to 7.4. All insulin preparation should be stored at a neutral pH except glargine preparation. Glargine is supplied at a pH 4.
All insulin preparation must be supplied at a neutral pH except glargine. Sulfonylureas are safe in the renal failure. Okay, sulfonylureas except glyburide and milletonides, they are safe in the renal failure. Metformin is a drug of choice for type 2 diabetes mellitus, and it is a first line drug for therapy of type 2 diabetes, जो मैंने ऑलरेडी एक बार बोला है. So metformin is a drug of choice in the type 2 diabetes mellitus, first line drug for type 2 diabetes. Bigonides act by decreasing the production of glucose and increasing the production of utilization of glucose. Rosaglutathione will increase the risk of angina and myocardial infarction, as well as rosaglutathione will increase the risk of angina and myocardial infarction, as well as increase the blood cholesterol level. So rosaglutathione is less preferred. Pioglitazone is more preferred. Pioglitazone is more preferred, but long-term use of pioglitazone is associated with the bladder cancer. तो जो ग्लिटाजोन्स है उसमें पायोग्लिटाजोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि रोसाग्लिटाजोन क्या करता है, रिस्क ऑफ एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन है उसको, ये ज़्यादा ही प्रेफर नहीं करते, तो पायोग्लिटाजोन करते हैं. लेकिन पायोग्लिटाजोन अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ब्लैडर कैंसर बनता है. पायोग्लिटाजोन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर. पायोग्लिटाजोन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर. रिमेंबर. नेक्स्ट विल सी पायोग्लिटाजोन, देखा है वही आ गया. पायोग्लिटाजोन एज अ रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर अपन लॉन्ग टर्म यूज़. Pramlintide is the only drug approved for type 1 and type 2 diabetes. ये मैंने ऑलरेडी एक बार बोला है. Pramlintide क्या है? Amylin analog. What is Pramlintide? It is a amylin analog. Okay? So it is a only approved drug for treatment of type 1 and type 2 diabetes after insulin. यहाँ पे एक बाकी है after insulin. Insulin तो है, इसके बाद में क्या है? Pramlintide. After insulin. After insulin, Pramlintide, which is a amylin analog used for the approved for the drug treatment for type 1 and type 2 diabetes. ठीक है. इंक्रेटिन क्या है? इंक्रेटिन्स दे आर द न्यू ड्रग्स फॉर डायबिटीज. इंक्रेटिन्स दे आर द न्यू ड्रग फॉर डायबिटीज. इट इज अ नेम ऑफ रिसेप्टर. इंक्रेटिन्स आर द न्यू ड्रग फॉर डायबिटीज. एक्ट बाय GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट. इंक्रेटिन्स एक नया कैटेगरी है ड्रग का जो इंक्रेटिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होते हैं. सो दे एक्ट बाय GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट. इन पे आता है glinides, okay, nataglinide and all that, GLP-1 agonist. Then DPP-4 inhibitors, they will prevent the metabolism of GLP. So उसमें क्या आता है, और the gliptins, sitagliptins, valdagliptins वगैरह. वही चीज़ है मैं बोला है कि oral glucose अगर लेंगे आप, so oral glucose will stimulate more release of insulin than intravenous glucose. That is because of the oral glucose will also secrete the GLP, glucagon like peptide, in the intestine, right? So that amplifies the action of insulin. So that's why GLP-1 agonist like exenatide, linaglutide, they are used. And this GLP has a very short half-life, 1 to 3 minutes. They are metabolized by dipeptidyl peptidase enzyme, DPP, dipeptidyl peptidase 4 enzyme. Okay, and DPP-4 inhibitors also developed to increase the GLP-1 level, and they are known as the gliptins, sitagliptins and all that. Amylin analog like pramlintide is synthetic analog of islet amyloid polypeptide, IIPP, islet amyloid polypeptide. So act by decreasing the glucagon secretion, okay, gastric emptying and appetite, act by decreasing the glucagon secretion and gastric emptying. Gastric emptying delay करता है तो absorption कम होता है ग्लूकोज का भी, एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ डायबिटीज मेल्टस. वही बोला है पहले, ओनली ड्रग आफ्टर इंसुलिन अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2. SGLT2 inhibitors like dapagliflozin, canagliflozin, they will prevent the reabsorption of glucose from the proximal convertible. They has adverse effect of increased urinary tract infection. क्यों होता है इनका UTI इन्फेक्शन, इसका एडवर्स इफेक्ट? देखो ये ड्रग क्या करते हैं, these drug will decrease the reabsorption of glucose from the nephron. Okay? So what will happen? So there is a excretion of glucose in the nephron. So glucose का molecule बड़ा होता है, molecular weight बड़ा होता है. So due to that there is a increased risk of infections. So therefore they will have a UTI, urinary tract infection, and genital infection. Incidences of higher rate of breast and bladder cancer with the dapagliflozin. Okay. Mechanism of action of dipeptidyl peptidase inhibitor.
ओरल ग्लूकोज, आप ओरली ग्लूकोज जो ले रहे हैं, ओरल ग्लूकोज विल स्टिमुलेट द इंसुलिन more more okay, more stimulation of insulin release there than the oral growth. ओरली अगर ग्लूकोज लेंगे तो इंसुलिन का रिलीज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस इंसुलिन, इंट्रावेनस ग्लूकोज। मतलब एक पेशेंट है, उसको क्या करो, ग्लूकोज का 10 ग्राम पाउडर दे दो खाने के लिए ओरली, ठीक है, एक पेशेंट को ओरली दिया ओरली। दूसरा एक पेशेंट है, उसको क्या कहा, वही ग्लूकोज आईवी दे दो इंट्रावेनसली। ये जो पेशेंट है उसमें ज़्यादा इंसुलिन बनेगा, सीक्रेट होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। क्यों? बिकॉज ओरल इंसुलिन, ओरल ग्लूकोज विल स्टिमुलेट more release of insulin, because oral glucose will also stimulate the release of one peptide known as a GLP, glucagon like peptide, and this peptide helps to release more insulin. It will amplify the, okay, it is also a peptide present in the GIT, GLP भी कहाँ पे होता है, GIT में होता है। So glucagon like peptide, or it is a, it amplifies the insulin release, okay. Now it's agonist, okay. So GLP-1 has a very short half-life, 1 to 3 minutes, and that is metabolized by enzyme known as a DPP, dipeptidyl peptidase 4, inactive GLP, right? Its analog, okay. So GLP-1 acts on its receptor known as a incretin. It is a G protein coupled receptor. So drugs which are analog to GLP-1 known as exenatide, इसके ऊपर GPAT 23 में क्वेश्चन आ चुका है ये सब। Then exenatide and linaglutide, they are a GLP-1 agonist, okay. Now इसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है DPP4, डाइपेप्टिdyl peptidase 4, that is inhibited by gliptins, sitagliptin, valdagliptin, sexagliptin, alogliptin, okay, linagliptin. So these gliptins will inhibit the DPP. So अगर GLP लेवल बढ़ गया, GLP लेवल जितना ज़्यादा रहेगा उतना इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा, जितना ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा उतना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जितना GLP कम रहेगा उतना, ओके, कम रहेगा उतना ग्लूकागॉन ज़्यादा रिलीज होगा, और ज़्यादा ग्लूकागॉन रिलीज होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। दैट्स ऑल एक्शन ऑफ ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन GLP-1। समझ में आया क्या? समझ लगा? हेलो, ओके। सो विल फिनिश दिस चैप्टर, ओके। ये जो डायग्राम है, okay, how there is a development of ketoacidosis, how there is development of ketoacidosis in the diabetic patient, उसका ये diagram है। So it is this diagram is present in the KD3 party. So for example, new patient of diabetes mellitus, okay. So type 1 diabetes का अगर है patient, so you can control the diabetes by diet and giving insulin, so it is controlled by type 2 diabetes, diet plus exercise plus medication, that is nothing but the oral hypoglycemic. If controlled, okay. If not controlled, then you have to go this uncomplicated, well nourished, अगर nourishment अच्छा है वो पेशेंट का, obese है पेशेंट, so metformin देना है आपको, okay. Then sulfonylureas और मिग्लिटॉल और pioglitazone और DPP4 inhibitor और अल्फा ग्लूकोसलेज इनहिबिटर, ये इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन, मेटफॉर्मिन कंपलसरी है, उसके साथ में एक एक तो आपको सल्फोनिलयूरेज देना है, या फिर मिग्लिटॉल दे सकते हो, या फिर पायोग्लिटाजोन, या फिर आपको ग्लिप्टिन्स दे सकते हो, या फिर आपको एक्राबोस दे सकते हो। अगर ये कंट्रोल होता है तो ओके, नहीं कंट्रोल होता है तो फिर आप क्या करना है, कंट्रोल होता है तो ओके, नहीं कंट्रोल होता है तो फिर मेटफॉर्मिन प्लस टू डोज ऑफ सल्फोनिलयूरेज और मिग्लिटॉल, इसमें से दोनों, दो चार में से कोई भी दो, ठीक है। इस टाइम पे एक ही था, इस टाइम पे दो है, ठीक है। इफ कंट्रोल्ड ओके, इफ नॉट कंट्रोल्ड अगेन क्या करना है, स्विच करना है, स्विच ओवर टू इंसुलिन एंड मेटफॉर्मिन, ऐसा। नाउ सीवियर डायबिटीज अंडरवेट पेशेंट है, कॉम्प्लिकेशन है लाइक सर्जरी, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, इंसुलिन प्लस मेटफॉर्मिन, तो ऐसा। सो इट इज अ कंट्रोल डायग्राम, हाउ टू यूज ड्रग, इसका ये आपके लिए नहीं है, इट इज मोस्टली important for the physicians. Now medicinal chemistry of that drugs, medicinal chemistry of anti-diabetic drug, तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला कैटेगरी ऑफ ड्रग है सल्फोनिल यूरेज, सल्फोनिल यूरेज। जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फोनिल, सल्फोनिल मतलब एसो2 ग्रुप 2 NH2, ये सल्फोनिल, सल्फोनिल यूरिया मतलब NH2 COO NH2, ठीक है। दिस ड्रग will have a sulfonyl group and urea group, that's why it is known as sulfonyl
urease. Okay. Now this is the general structure, common structure. बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पहला पोजीशन में एक R ग्रुप, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे हम नाइट्रोजन के बाद में जो R ग्रुप है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन. This is R and this is R1. Okay. Now structural activity relationship of this sulfonyl urease. Okay. Okay. Substituent at a para position of benzene ring is prepared like methyl acetyl amino chlorobromo methyl or thiomethyl increases the hypoglycemic. यहाँ पे जो है R1, so R1 के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, मिथाइल ग्रुप लगेगा या फिर एसिटाइल ग्रुप लगेगा, अमीनो ग्रुप लगेगा, क्लोरो ब्रोमो मिथाइल और थायोमिथाइल, it will increase the hypoglycemic. So substitution at this will increase the hypoglycemic of this parent. Now next point, if benzene ring at para position is substituted with the aryl carboxy amido alkyl, if benzene ring at para position ये, if it is substituted with the aryl carboxymido alkyl, the second generation drug like glibenclamide, glycylazide, glipizide will be produced. So activity is increased due to specific distance among the nitrogen atom of the substituent and sulfamido amide nitrogen. यहाँ पे अगर अराइल कार्बोक्सिमिडो अल्काइल ग्रुप मतलब बेंजीन, तो सी डबल ओ एंड अल्काइल ऐसा ग्रुप ऐड करेंगे तो इट विल इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड this. So it will increase the activity that is present in the second generation sulfonyl urease. Now size of substituent at the terminal nitrogen is crucial for activity. It should import the lipophilicity. मतलब क्या, पहले दो पॉइंट्स है, they are related with the R1 substitution. यहाँ पे क्या होना चाहिए तब जाके एक्टिविटी इंक्रीज होगी. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए या फिर एसिटाइल अमाइनो क्लोरो ब्रोमो मिथाइल, okay, thiomethyl. It will increase the hypoglycemic rate. Again, if benzene ring at para position substituted with the aryl carboxyamide alkyl. aryl carboxyamide, aryl मतलब बेंजीन रिंग या फिर aromatic, carboxyamide मतलब C double O NH, that is carboxyamide, alkyl that is present in the second generation sulfonamides. So activity is increased due to the specific distance among the nitrogen atom of substituent and sulfamido amide. तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है, तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है इसमें डिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए एक्टिविटी बढ़ती है. नेक्स्ट वन इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑन टर्मिनल नाइट्रोजन. टर्मिनल नाइट्रोजन कौन सा है, R वाला. सब्स्टिट्यूशन ऑन दिस, द सब्स्टिट्यूशन शुड बी such substituent which will import the lipophilicity. मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो लिपोफिलिसिटी बढ़ाएगा ये मॉलिक्यूल. सो लाइक एन मिथाइल और एन इथाइल shows no activity, but हायर अगर है एन प्रोपाइल और एन ब्यूटाइल और जो ज़्यादा हायर लिपोफिलिसिटी बढ़ाएगा मतलब ज़्यादा कार्बन, so that will increase the activity. If substitution on nitrogen exceeds 12 carbon, then loss of activity. मतलब यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा, इथाइल मिथाइल जो है ना वो इंक्रीज नहीं करेगा. यहाँ पे अगर प्रोपाइल डाल दिया, यहाँ पे अगर ब्यूटाइल डाल दिया, पेंटाइल डाल दिया, एक्साइल डाल दिया, आइसोब्यूटाइल डाल दिया, आइसोपेंटाइल डाल दिया, that will increase the activity. But total number of carbon which is substituted at this R should not exceed 12. 12 से ज़्यादा अगर हो गए तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी. So this is the structure activity relationship of सल्फोनिल यूरेज. ठीक, तो इनका ड्रग्स के एग्जांपल देखो. सल्फोनिल यूरेज जनरल स्ट्रक्चर क्या है, दिस आर बेंजीन रिंग SO2 NH CO NH R. तो पहला होता है कार्ब्यूटामाइड. कार्ब्यूटामाइड में क्या है, बस यहाँ पे पैरा अमाइनो बेंजीन और यहाँ पे क्या है ब्यूटाइल ग्रुप है, बस हो गया कार्ब्यूटामाइड. टोल ब्यूटामाइड, टोल मतलब क्या है, टोलिन. टोल मतलब क्या है, टोल फॉर टोलिन. टोलिन को बताए बेंजीन रिंग प्लस मिथाइल. तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए टोल क्या है, टोलिन. ठीक है, और यहाँ पे क्या है जो कार्ब्यूटामाइड है वैसा ही, बस फक्त डिफरेंस क्या है, ओनली डिफरेंस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस अमाइनो विथ मिथाइल. सो
आईपैक नेम क्या है, 1 ब्यूटाइल 3 फिनाइल टोलिल सल्फोनिल यूरिया। 1 ब्यूटाइल, ठीक है, ये कार्बन को बोलेंगे 1 ब्यूटाइल, ठीक है। 3, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है। 3 में क्या है, देखो 3 इन ब्रैकेट पैरा टोलिल सल्फोनिल, मतलब पैरा की पोजीशन पे मिथाइल है, ये पूरा जो है उसको बोलेंगे टोलिल, पैराटोलिल, एंड ये क्या है, सल्फोनिल। ओके, सो आईपैक नेम क्या होगा टोलबिटामाइड का, सो दैट इज नथिंग बट द 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल, देखो 1 ब्यूटाइल, ये 1 वाला कार्बन, 1 नाइट्रोजन 1 2 3, सो 1 ब्यूटाइल इंटू 3, 3 मतलब ये इन 3 इंटू पैराटोलिल सल्फोनिल, क्या है ये, यूरिया। दैट इज द आईपैक नेम ऑफ दैट। आईपैक नेम कभी कभी पूछते हैं। देन क्लोरप्रोपामाइड, क्लोरप्रोपामाइड मतलब क्या है, क्लोर मतलब क्लोरीन होगा, उसमें डाल दो क्लोरीन यहाँ पे, बाकी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ब्यूटाइल की जगह यहाँ पे देखो क्लोर है तो क्लोरीन डाल दो। प्रोपा है, प्रोपा, प्रोपा इज फॉर, प्रोपा मतलब क्या, 3, ब्यूटा मतलब 4, डाई मतलब 2, मोनो मीन्स 1, मालूम है आपको, ये क्या है, ब्यूटाइल रिंग मतलब 4 है, तो प्रोपा है तो यहाँ पे 3 डाल दो, C3H7, प्रोपाइल ग्रुप डाल दो, तो होगा क्लोरप्रोपामाइड। सो आईपैक नेम क्या होगा उसका, क्लोरप्रोपामाइड का 1 इंटू क्लोर क्लोरोफिनिल, 1 इंटू क्लोरोफिनिल सल्फामाइल, बी, इस टाइम भी इसको नंबर 1 देंगे, 1 इंटू क्लोरोफिनिल सल्फो सल्फो सल्फोनिल 3 प्रोपाइल यूरिया, हो गया, सिंपल है। या फिर आप, इतना सिंपल है। देन टोलजामाइड, टोलजामाइड, ठीक है, टोलजामाइड में क्या है कि टोलजामाइड, ओके, सो इसमें हेक्साहाइड्रोएज़ेपिन देंगे, हेक्साहाइड्रोएज़ेपिन इन एडिशन टू टोल। भाई टोल में क्या है, टोल मतलब क्या है, टोलिन, टोलिन मतलब क्या है, यहाँ पे फिनाइल एंड मिथाइल ग्रुप आएगा, टोलिन, ओके। टोल, टोलजा, आजा मतलब क्या, एज़ेपिन थी, ऐसा याद रखना है, एजे मतलब क्या, एजे, टोलजामाइड, तो टोलिल है प्लस एज़ेपिन है, बाकी तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना इसमें, बस क्या है कि नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन 1 में क्या है, हेक्साहाइड्रो एज़ेपिन, नाइट्रोजन 1 में है हेक्साहाइड्रो एज़ेपिन, ठीक है, और 3 में क्या है, पैराटोलिल सल्फोनिल यूरिया, दैट्स इट। देखो 1 इंटू 1 इंटू हेक्साहाइड्रो एज़ेपिन, ओके, एंड ये नाइट्रोजन कितना है, 3, सो 3 इंटू पैराटोलिल सल्फोनिल, है ना, पैराटोलिल सल्फोनिल, 1 इंटू हेक्साहाइड्रोएज़ेपिन, 3 इंटू पैराटोलिल सल्फोनिल, है क्या बचा, बचा है यूरिया, CH2 डबल बॉन्ड O, NH2 डबल बॉन्ड O, NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2, यूरिया। सो 1 हेक्साहाइड्रोएज़ेपिन 1 इल पैराटोलिल सल्फोनिल यूरिया, दैट्स इट। इट इज आईपैक नेम ऑफ टोलजामाइड। सबका तो नहीं ले लूंगा मैं, आईपैक नेम इसका इंपॉर्टेंट है, टोलबिटामाइड का आईपैक नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी नहीं लेते, लेने को तो क्या ले सकते। नेक्स्ट है एसिटोहेक्सामाइड, एसिटोहेक्सामाइड, ठीक है, एसिटोहेक्सामाइड, एसिटो मतलब क्या, एसिटिल ग्रुप, एसिटिल मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, देखो नाम में ही रहता है सब, नाम में क्या रखा है ऐसा नहीं, नाम में सब कुछ रखा है, एसिटोहेक्सामाइड, सो एसिटोल ग्रुप, बाकी ये फिनाइल रिंग जैसे कैसे, ये यूरिया जैसे का SO2 NH2 NH2, हेक्सामाइड मतलब, हेक्सा मतलब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन, इतना सिंपल है, 1 इंटू 4 इंटू एसिटो एसिटिल फिनाइल सल्फामाइल 3 साइक्लोहेक्सेनिल यूरिया, हो गया। सेकंड जनरेशन कौन है, देखो सेकंड जनरेशन में होता है ग्लिपेनकेनामाइड, ग्लिपेनकेनामाइड इज आल्सो नोन एज ग्लाइबोराइड, तो ग्लाइबोराइड का ये स्ट्रक्चर है, देखो वही सेम है, ये स्ट्रक्चर को आप देखा है अपने, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे एसिटोहेक्सामाइड का, है ना, तो एसिटिल ग्रुप ने को बस फक्त ओनली यहाँ पे एसिटिल ग्रुप रिमूव किया है, और क्या डाला है यहाँ पे डाला है 5 क्लोरो, ओके 5 क्लोरो, ये 5 1 2 3 4 5 क्लोरो 2 4 साइक्लोहेक्सिल अमाइनो कार्बोनिल अमाइनो सल्फोमाइल, ये बस ये पे डाला है CONH, यहाँ पे ये सब डाला है, बाकी तो ये सेम ही है। देन ग्लिपिजाइड, ग्लिपिजाइड में भी वैसा कुछ, वैसी ही कुछ कहानी है,
बस यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, क्या ये नहीं है, डिफरेंस याद रखो स्ट्रक्चर में। याद स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, सिंपल। अभी देखो ये ग्लिबिन के नाम आईडी, पहले तो ग्लिबिन पर क्यों आ गया ग्लाइपराइड इसको बोले, उसके बाद में ग्लिपिजाइड आया, तो क्या चेंज किया, बस यहाँ का जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो रिमूव किया, यहाँ पे क्लोरो की जगह मिथाइल डाल दिया, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है। देखो देन आ गया ग्लाइक्लेजाइड, ग्लाइक्लेजाइड में पहले कौन सा आया ग्लिपिन के नाम, उसके बाद में ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपिराइड, ग्लिमिपिराइड का स्ट्रक्चर निकालो वैसे को वैसे, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है उसमें ग्लाइक्लेजाइड। तो ऐसा सार है, आईपैक नेम सिर्फ टोल्बिटामाइड का करो एंड सार पार्ट करो, दैट इज इम्पोर्टेंट, बाकी स्ट्रक्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज अ बायगोनाइड, बायगोनाइड में आता है आपका मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन। सो बायगोनाइड में आता है मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन, पहला आता है फेनफॉर्मिन, फेन मतलब क्या है, फिनाइल, सो वन फिनाइल इथाइल बायगोनाइड, बायगोनाइड मतलब क्या है, देखो बायगोनाइड मतलब टू यूरिया मॉलिक्यूल, NH2 C double bond O NH2, okay, two यूरिया मॉलिक्यूल व्हेन दे आर गोनेडिनो ग्रुप, गोनेडिनो ग्रुप मतलब क्या, यूरिया का है ना ऑक्सीजन निकल के NH डाल दो, NH2 ओके C डबल बॉन्ड NH NH, तो वो हो गया वन गोनेडिनो, तो यहाँ पे बाइगोनेडिशन मतलब दो गोनेडिनो, देखो ये हो गया आपका गोनेडिनो ग्रुप। फेन फॉर्मिन, फेन मतलब क्या, फिनाइल, फिनाइल इथाइल गोनेडिन, तो इसका नाम ही है वन फिनाइल इथाइल बाइगोनेट। मेट फॉर्मिन क्या है, मेट मतलब मिथाइल, तो फिनाइल की जगह मिथाइल डाल दो, डाई मिथाइल, वन वन डाई मिथाइल बाइगोनाइट हो गया इसका आईपैक नेम। गोनाइट तो सेम ही रहेगा ना। थर्ड आता है मैग्नेटाइट्स, मैग्नेटाइट्स क्या है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, बेंजोइक एसिड क्या है, ये है बेंजोइक एसिड मैग्नेटाइट्स, याद रखो मैग्नेटाइट्स, देन रेपग्लिनाइट, स्ट्रक्चर उनका अलग अलग है, रेपग्लिनाइट नेटिक्लिनाइट, ये इतना डीप में नहीं, आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ फेनफॉर्मिन और आईपैक नेम ऑफ मेटफॉर्मिन और व्हिच रिंग इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटाइट्स, ऐसा पूछेंगे। देन थायाजोल्डीन डायोन्स, नेक्स्ट होता है थायाजोल्डीन डायोन्स, थायाजोल, देखो थायाजोल लीडिन डायोन्स, कहाँ है थायाजोल्डीन डायोन्स, यहाँ है। थायाजोल मतलब क्या, 5 मेटरिंग सल्फर नाइट्रोजन, डायोन्स मतलब 2 कीटोन, यहाँ पे 2 कीटोन है थायाजोल्डीन डायोन्स, पायोग्लिटाजोन, सिलाग्लिटाजोन, रोसाग्लिटाजोन। देन मिग्लिटॉल क्या है, मिग्लिटॉल इज नथिंग बट द, मिग्लिटॉल का एक स्ट्रक्चर है ना, सिंपल है, इट्स टॉल मतलब क्या है, इसमें अल्कोहल ग्रुप है ज़्यादा, तो अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर मिग्लिटॉल, ये दूसरा है अल्डोलिज इनहिबिटर टॉल सा। तो ठीक है, आपको बस फेनफॉर्मिन मेटफॉर्मिन का आईपैक नेम, टोल्बिटामाइड का आईपैक नेम, क्लोरप्रोमाइड का आईपैक नेम, स्ट्रक्चर उसमें रिंग कौन सा है, इतना ही पार्ट